on Legal Metrology Act and the Packaged Commodities Rules. As we are all industry people and the state government officers, we are all aware there are a lot of things which are coming up in the new, which are with the new developments, new amendments in the Packaged Commodities Rules and the Legal Metrology Act. We will discuss it in detail today. We have with us our Honorable Shri Bendikshi sir. Sir, would you like to speak 2 words, please? Yes, Ashutosh ji. Please, sir. Over to you, sir. Please. Very good morning, Ashutosh ji. Ladies and gentlemen who are attending this very seminar, scientists and the laboratory officers. Legal metrology is very important things. It is name of the weights and measure. Now it is the legal metrology, and it is very popular throughout the world. Without this, there may not be any transaction. So with the development of the industries and the demand of the consumers, so many consumer goods are being packed in pre-packaged commodity. When it is packed in pre-packaged commodity, then it is required to make the certain declaration, like what is the name of the commodity, what is the net quantity, who has manufactured it, what is the date of manufacturing, what is its expiry date, and when it will be consumed, and what is its maximum retail price, what is the consumer grievance detail, and all those very things. So lot of the things are covered in the Legal Metrology Act, Section 18 and Section 36. On the basis of that, the Legal Metrology Packaged Commodity Rule has been made by Government of India. So lot of amendment has been done time to time. This rule is very popular in among the consumers as well as in the industries, because there are the thousand number of industries, those who are packing the goods and selling in the market, and you will find hardly anything which is not in pre-packaged commodities. So most of the things are coming into the pre-packaged commodity. Therefore, there are the packaged commodity laws are there. So time to time, Government of India has amended the rules. Recently, one very important amendment has been done, that is the removal of the second schedule. After removing it, our rules are competing with the international best practices. So it is very good that international companies are also, they were demanding to remove the clauses of the certain pack commodities sizes. Sizes are depending upon the manufacturers and the market requirement. So this is the international practice, and now that is available in India also. So that is one of the best practice which the department has given opportunity to the industries as well as to the consumers. The consumer may accept it, consumer may not accept it. If the package size is not of their choices, they will not accept it. Today, Ashutosh Agarwal, who is the Director Legal Metrology, Government of India, he is one of the expert of the legal metrology and the package commodity rules. He will deliver the lecture. I hope that all the people will be benefited from his lecture and grasp the knowledge and share the question whatever in their mind, and all the industries and the participant will be benefited. Thank you, Ashutosh. Thank you to all the participants. Thank you. Thank you very much, sir, for your always kind and motivating words. We are always thankful to you for your motivation and studying with us
for the development of this legal metrology system in this region. Thank you very much. Today, we are going to discuss about the Legal Metrology Act and the packaged commodities rules. As we are all aware, legal metrology is nothing. It is the application of legal requirements to measurements and measuring instruments. All type of measurements which are taking place, whether weighing or measuring, and the weighing and the measuring instruments which are used in any transaction and protection are covered under this legal metrology. The purpose or the objective of this legal metrology is to establish and enforce standards of weights and measures. There are a large number of standards of weights and measures. For example, we are having the base units, derived units, etc. 7 base units we have. All these are establishes and enforced under the Legal Metrology Act 2009. It ensures correct quantity in transaction and ensure accurate measurements and measuring instruments for transaction and protection. Any of the weighing and measuring instrument which is used in any transaction or protection, it has to be accurate and gives the correct quantity or the correct observation. The Legal Metrology Act also regulate trade and commerce in weights, measures, and other goods which we are transacting in terms of weight, measure, or number. So all type of trade and commerce are being regulated under this Legal Metrology Act 2009. The Legal Metrology Act also regulate the sale of prepackaged products, sale of prepackaged commodities. It ensures the declarations part and other necessary requirements. The legal metrology is not a new subject. We are all aware. If it is we have found its traces from the Indus Valley civilization. I have a small video. I would like to share with you. Are several ancient scriptures of Vedic period mention weights and measures. We have recorded history of measurement system in Indus Valley civilization with surviving samples. Uniform units of length were used in the planning of several ancient sites. Later, metrology flourished during Maurya and Mughal empires with the development of standard units for length, weight, and volume. Metrology took a definite shape during colonial period, but independent Bharat adopted the international metering system in 1956. Bharat is taking rapid strides. Bharat is the fastest rising economic power in the world. Legal metrology is contributing significantly in promotion of trade and exports by quality and quantity assurance in global markets. It has given rise to export-centric ecosystem in the country. By adopting international standards, legal metrology is promoting trade and export of weighing and measuring instruments worldwide. A robust legal metrology framework ensures public guarantee of precision, security, and accuracy in various types of weighments and measurements. Mandatory declarations on packaged commodities have ensured safety of general consumers. A network of state-of-art regional reference standard laboratories provide technical support to legal metrology by verification, testing, and calibration of weighing and measuring instruments. The Indian Institute of Legal Metrology at Ranchi imparts professional training to national and international participants from neighboring and developing countries in legal metrology. Much to our pride, Bharat is now issuing authority to the International Organization of Legal Metrology Certification System, in which measuring instruments are assessed and verified in an authorized laboratory. At present, 12 countries were approved by OIML for issuing OIML certificates. Now, Bharat is the 13th country in the world which can also issue OIML approved certificate. Regional Reference Standard Laboratory at Ahmedabad has been approved by OIML to conduct performance, endurance, quality, safety, and accuracy tests as per established international standards. Based on recommendations of laboratory, Department of Consumer Affairs may issue OIML certificate, which is accepted worldwide as a single path to enter in various country markets.
Earlier, if a measuring instrument manufacturer desires to enter in the international market, one has to apply to the internationally approved issuing authority of other countries, which requires a lot of time and money. But currently, this cumbersome process is no more for Indian manufacturers. Recognition by OIML is a milestone global achievement testifying technical prowess of Bharat. Earning and saving of precious foreign exchange, creation of ample employment opportunities, and promotion of innovations are other hallmark impacts of legal metrology. Indian weighing and measuring instruments are making a big headway in global markets. Bharat can issue the OIML approved certificates not only for our own manufacturers, but can also support the manufacturers of other countries and can earn foreign exchange. Legal metrology has become one of the torchbearers in New Bharat, paving way to make it a $5 trillion economy by 2030. I'm sorry, just wait, please, 2 minutes. There is some technical problem. I'm just checking. Kindly bear with me for 2 minutes. Actually, today there were a large number of participants, so we have made it live on YouTube. So I am just getting a few messages that the people are not able to see on the YouTube. Atulji, I'm just going to start within 2-3 minutes. Kindly bear with me. I think video was visible to all or not? Can anybody
Say yes or no. Oh, video was visible. I have just shown the video. That video was visible to all. Yes, sir. Visible. No video. I have just shown the videos. Tulji, I was just calling you 5 minutes back. Whether the video is visible. No, sir. Only PPT is visible, sir. Here. No, I'm just sharing the video again. You kindly just check. Actually, and Yes. I have shared that also. YouTube link. Have you seen the YouTube link? Have you Yes, received? sir. Link we have received, sir. Kindly check whether it is working or not. Okay, sir. Okay, I'm just sharing the video again. Please let me know whether it is working or not, and make the participants analyst Bharat, several now visible. Video is visible, Bharat, No, sir. not visible. No, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Visible, sir. Visible. scripture, Vedic period, ancient weights and measures. We have recorded history of measurement system in Indus Valley civilization with surviving samples. Uniform units of length were used in the planning of several ancient sites. Later, metrology flourished during Maurya and Mughal empires with the development of standard units for length, weight, and volume. Metrology took a definite shape during colonial period, but independent Bharat adopted the international metering system in 1956. Bharat is taking rapid strides. Bharat is the fastest rising economic power in the world. Legal metrology is contributing significantly in promotion of trade and exports by quality and quantity assurance in global markets. It has given rise to export-centric ecosystem in the country. By adopting international standards, legal metrology is promoting trade and export of weighing and measuring instruments worldwide. A robust legal metrology framework ensures public guarantee of precision, security, and accuracy in various types of weighments and measurements. Mandatory declarations on packaged commodities have ensured safety of general consumers. Network of state-of-art regional reference standard laboratories provide technical support to legal metrology by verification, testing, and calibration of weighing and measuring instruments. The Indian Institute of Legal Metrology at Ranchi imparts professional training to national and international participants from neighboring and developing countries in legal metrology. Much to our pride, Bharat is now issuing authority to the International Organization of Legal Metrology Certification System, in which measuring instruments are assessed and verified in an authorized laboratory. At present, 12 countries were approved by OIML for issuing OIML certificates. Now, Bharat is the 13th country in the world which can also issue OIML approved certificate. Regional Reference Standard Laboratory at Ahmedabad has been approved by OIML to conduct performance, endurance, quality, safety, and accuracy tests as per established international standards. Based on recommendations of laboratory, Department of Consumer Affairs may issue OIML certificate, which is accepted worldwide as a single pass to enter in various country markets. Earlier, if a measuring instrument manufacturer desired to enter in the international market, one has to apply to the internationally approved issuing authority of other countries, which requires a lot of time and money. But currently, this cumbersome process is no more for Indian manufacturers. Recognition by OIML is a milestone global achievement testifying technical prowess of Bharat. Earning and saving of precious foreign exchange, creation of ample employment opportunities, and promotion of innovations are other hallmark impacts of legal metrology. Indian weighing and measuring instruments are making a big headway in global markets. Bharat can issue the OIML approved certificates not only for our own manufacturers, but can also support the manufacturers of other countries and can earn foreign exchange. Legal metrology has become one of the torchbearers in New Bharat, paving way to make it a $5 trillion economy by 2030. So this is the way how this legal metrology
is not from today, but we are observing since Indus Valley civilization. If we talk about this Indus Valley civilization, we have found the bricks of the size of 3:2:1 in the ratio. Later on, after that, we have heard about the Maurya period, when this Chanakya has made the complete rules and the laws for the enforcement of weights and measures. Then we were having the Mughal emperors, then British period, and after the freedom, our forefathers were very passionate about this legal methodology, and it was observed that the first legal methodology act, or the Standards of Weights and Measures Act 1976, came into force from 1956. This act made a foundation for the legal methodology framework, ensuring transparency in trade and commerce. After that, we were having this Standards of Weights and Measures Act 1976 and the Standards of Weights and Measures Act Enforcement Act 1985. These two acts actually framed the legal methodology policies in the country, how that there will be a complete system of legal methodology in our country. It was made under the Standards of Weights and Measures Act 1976. It was beautifully drafted act, but it was repealed in 2009 when we brought the Legal Metrology Act 2009. It came into force from 1st of April 2011. And now we are working under the Legal Metrology Act 2009 with all the rules. These are the few weighing and measuring instruments which are all covered under the legal metrology, maybe a petrol station, maybe a weigh bridge, or maybe a blood pressure meter or a thermometer. So all these type of weighing and measuring instruments are covered under the Legal Metrology Act 2009. Under this Legal Metrology Act, various rules have been framed by the Union of India. The first one is the General Rules 2011. These Legal Metrology General Rules 2011 prescribes how a weighing and measuring instrument will be manufactured, how it will be tested, how it will be verified and stamped, what will be the period of verification. There are a lot of other things which are given under this General Rule 2011. These General Rules 2011 are very important for all type of weighing and measuring instruments. Name is general, otherwise they are completely technical rules. And most of these rules have been framed on the basis of the international recommendations. International Organization of Legal Metrology recommendations. We have framed these rules, and these rules are actually effectively enforcing in the country. All type of weighing and measuring instruments are internationally correct, and the standards which we are having in any of the developed countries, the same type of standard, same type of testing method and the procedure are being used in our country, in India. So we can say that the weighing and measuring instruments used in India are internationally compliant equipments. We have the packaged commodities rules. These rules are also very important because nowadays most of the products are available in the form of pre-packaged commodities. So how a prepackaged commodity will be checked in terms of its net quantity, because a consumer cannot check after getting it from the market or after taking it at his home. He cannot check how much is the quantity available in a prepackaged commodity. We have approval of models rules, because international practice is whenever a new type of weighing and measuring instrument, any type of weighing and measuring instrument is manufactured और imported in our country, whether आप manufacture करते हैं या import करते हैं किसी भी weighing और measuring instrument को, तो किसी भी country के अंदर वहां पर उसका approval of model होना बहुत important है. In India also we have a provision, we have the rules, complete set of rules for approval of models of weighing and measuring instruments. Any of the weighing and measuring instrument which you are observing, which you are finding in the market, they are all approved by the Government of India after rigorous testing.
We also have the national standards rules. National standards rules are basically the completely technical rules, all type of technical units, all type of standards which we are using in our country, all type of physical quantities which we are using with their numbers, with their values, maybe a Planck's constant, maybe the speed of light, maybe the mass, length, volume, anything. All are covered under the national standards rules. These rules are very important whenever any change takes place at the international level, whether it is at BIPM level, International Bureau of Weights and Measures, or at OML, International Organization of Legal Metrology level, we used to amend our rules regularly on regular basis. We also have the numeration rules. Numeration rules prescribes how we can write a number, because it is a very simple practice all over the world in which we used to write after the decimal 2 digits and before the decimals in the form of 3 digits in at international level, like thousands, million, billion, trillion, like that, in the form of 3 zeros. But when we talk about this legal metrology in India, we actually not only in legal metrology, but in general system, general practice, we used to write after the decimal 2 digits, before the decimal 3 digits, and then in the digits in the form of 2 digits. That means thousands, lakhs, crores, arab, kharab, like that. So we used to put 3 digits and then in the form of 2 digits. So both of the two ways of representing a number is allowed in our country, maybe in 3 digits or maybe in 2 digits, like that. We also have a training institute in our country, which is the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi. For this institute, the rules are also being framed, how it will be operational, what type of certificates it will issue, and how it will be providing the facility of training in our country. The legal metrology government approved test center rules are also made for verification, because the verification in India is a big job. We are getting crores of equipments every year, the new equipment, and the last old equipments are also available. We consider that for a small wing and measuring wing instrument or a measuring instrument, at least for 5 years, it functions properly. So we are actually getting every year the large number of new equipments, and at a time there are crores of equipments, weighing and measuring instruments are available. The verification, yearly verification of these weighing and measuring instrument is a big task. To share this responsibility with a few of the private labs, government has framed the government approved test center rules 2013. I would like to request all the participants who could not register themselves, kindly share their name, email ID, and the phone number in the chat box, or when you are joining it through the YouTube channel, kindly take a picture of this program right now and share it on my email or the telephone number, so that we can issue the certificates of participation after the program. So we need the information, because many of you could not join directly through after registering it, but many of you have joined through the YouTube channel. So kindly share your information with this photograph in which you are also present, so that we can give you we can share you the certificate after the program. State governments have also framed their own legal metrology enforcement rules. Every state and the UT has its own enforcement rule under the act, because this legal metrology system in the country is in the concurrent list. Being in the concurrent list, few of the rules are being made by the Union of India, and few of the powers are also given to the state governments to frame their rules. Earlier, this system was in the state list and the union list, but now the weights and measures, the subject of weights and measures is in the union list and the concurrent list. So the union government has its own responsibility, as well as the state governments are also empowered to make their own rules. This Legal Metrology Act is applicable to all type of weighing and measuring instruments, as we have already seen. It is all type of trade and transactions, provide assurance of quantity delivered in all transactions. It also ensures the declarations on prepackaged commodities. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर जो वेरिफिकेशन और स्टैंपिंग है ऑफ ईच वेट एंड मेजर, इट इज ऑल्सो mandatory necessary. कोई भी व्यक्ति, anyone who is using the weight or measure for any transaction
or protection need to get it verified and stamped after a regular period of time from the legal metrology officers. Government has also it is also prohibited that the manufacturing, repairing or sale of weight and measure is not possible without having a valid license from the state governments. Only one director for a company or a person for any establishment or unit may be nominated for the compliance in the company. Earlier क्या होता था, सारे के सारे डायरेक्टर्स जो भी कंपनी के होते थे वो सारे के सारे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के वायलेशन पर उन सब के अगेंस्ट केसेस बुक कर दिए जाते थे. अभी हमने एक प्रोविजन बनाया लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर कि कंपनी अपने एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकती है फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स. In case of any violation, only that director will be responsible. And also the compounding, जो कंपाउंडिंग होती है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर, वो भी केवल डायरेक्टर की होगी जो रिस्पॉन्सिबल है, और कंपनी की होगी. बाकी लोगों के ऊपर से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी या बाकी लोगों को कंपाउंडिंग नहीं करना पड़ेगा. ये सभी वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है. जैसे ट्रांजैक्शन होता है सॉलिड कमोडिटीज का, इट विल बी इन केजी, एंड फॉर लिक्विड कमोडिटीज इट विल बी इन लीटर, लाइक पेट्रोल. मैंने दोबारा मैं बोल देता हूं, जो लोग YouTube चैनल पे हैं काइंडली एक पिक्चर लेकर के इसको अपना मुझे शेयर कर दीजिए बाद में डिटेल, सो दैट हम लोग एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको इशू कर सकें. यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो सर्टिफिकेट अपने आप आ जाएगा. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का एक बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है इसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. जो हमारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, बेसिकली इंडिया ने जो मीटर कन्वेंशन है वो 1956 में साइन किया. एंड आफ्टर साइनिंग, बिकॉज मीटर कन्वेंशन 1875 में कुछ कंट्रीज ने 15-16 कंट्रीज ने मिलकर के साइन किया, और उसके बाद जब इंडिया फ्री हुआ तो हमने बहुत जल्दी 1956 में ही ये मीटर कन्वेंशन साइन किया. हमारी कंट्री में जो यूनिट्स ऑफ यूज वेट एंड मेजर हैं वो सारे के सारे आपके एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके अंदर यूज होते हैं. ये मैंडेटरी है. कोई भी दूसरा यूनिट जैसे पौंड, ऑन्स, गैलन एटसेट्रा ये अलाउड नहीं है. या इससे पहले हमारी कंट्री में भी जो तोला, माशा, रत्ती वगैरह यूज होते थे वो सारे के सारे हमने बंद कर दिए हैं. नाउ ओनली द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अलाउड टू बी यूज्ड इन आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें लेंथ की, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एंड एवरी मेजरमेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर ओनली. मास विल बी इन केजी, टाइम विल बी इन सेकेंड, करंट विल बी इन एम्पियर, temperature will be in Kelvin, luminous intensity is the candela, and amount of substance is the mole. So these are the 7 base units, and all drive units have been made after using any of these 7 units. CGPM, the General Conference of Weights and Measures, in November 2018 has revised the international system of units. Now, all these definitions from 20th May 2019 have been changed, and they are from artifacts to the fundamental constants of nature. For example, जैसा आप सबको पता होगा, हम जब बात करते थे 1 kg की 1 kg मास क्या है, जो हमने प्लेटिनम इरेडियम का जो एक पीस है, जो टुकड़ा है, which has been placed at पेरिस, जो पेरिस में रखा हुआ है BIPM की लैब में, हम वहां से हम लोग कैलिब्रेट करते थे. सारे जितने भी कंट्रीज थे उनके जो एनएमआईज थे वो अपने नेशनल मास को 1 kg को उस 1 kg से कैलिब्रेट करते थे आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. बट नाउ एवरी यूनिट हैज बीन चेंज्ड. अब जो प्लेटिनम इरेडियम का टुकड़ा था या कोई लेंथ का स्टैंडर्ड था, उनकी जगह पर हमने बात की है कि सारे के सारे कांस्टेंट्स जो होंगे, सारे के सारे यूनिट्स जो होंगे, दे विल बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर. इसके साथ अभी हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो -30 से +30 तक चली गई हैं. पहले हमारे पास जो यूनिट्स थी वो इतनी नहीं थी. -27 और +27, -30 एंड +30. अभी रिसेंटली रोंटो, केटा एंड क्यूटो अभी इन्होंने ऐड किया है इंटरनेशनल लेवल पे, जो सारे के सारे यूनिट इसमें आ गए हैं. ये सारा का सारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. ये क्या बोलता है कि जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, इट विल बी इन केजी. kg will be represented in terms of Planck constant. Planck constant is a universal constant. It can never be changed. जो length है मीटर, it will be represented in terms of speed of light, and time. Second will be represented in terms of the hyperfine
transition frequency of the cesium atom, and because it is again a universal constant. ये सारे के सारे यूनिट्स जो पहले हम बात करते थे आर्टिफैक्ट से लिंक्ड हैं, अभी आर्टिफैक्ट से कोई भी लिंक्ड नहीं है. ऑल दीज आर लिंक्ड विद द फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर. Ampere is from charge, Kelvin, Boltzmann constant, mole is Avogadro number, and candela is nothing, it is the luminous efficacy. कितनी लाइट पड़ेगी of a monochromatic radiation of frequency 540 टेराहर्ट्ज. यदि 540 टेराहर्ट्ज की हम लाइट लें तो उससे कितनी रोशनी पैदा होगी. दैट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लाइक दैट. वो पूरा का पूरा हमारा एक डेफिनेशन इसके अंदर दिया गया है. All of these are having zero uncertainties. From 20th May 2019, we are using these units. जैसे अभी मैंने आपको बताया मास के केस में इंटरनेशनल लेवल पे तो हमने बात कर ली कि सारी की सारी यूनिट्स अब आपकी एसआई सिस्टम से लिंक्ड होंगी. लेकिन अभी तक क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे पास यदि हम हायरार्की चार्ट की बात करें, ये हायरार्की चार्ट स्टैंडर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपका वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं, या कोई भी स्टैंडर्ड, नॉट ओनली द वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एनी ऑफ द स्टैंडर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, क्या वो कैलिब्रेटेड है, क्या वो टेस्टेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट जरूरी नहीं है कि हम उसको इंटेंशनली टेम्पर करते हैं. इसके यूज के साथ इसकी इन द टियर एंड वियर आता है, और उसकी वजह से भी ये इक्विपमेंट कई बार टेम्पर हो जाते हैं, या नॉट टेम्पर हो जाते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है वो खराब हो जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज प्लेस्ड एट पेरिस, फ्रांस of mass. The national prototype of India is kept at National Physical Laboratory, New Delhi. It is one of the most important laboratory in our country. It is a best laboratory having the best system, best standards of the international level in India, in Delhi. The mass which we are having at National Physical Laboratory, we used to send this mass after every 10 years to international standard for calibration. We have then after the national prototype, which is we are sending to the international prototype after every 10 years, we have below the international prototype, we have the reference standards laboratories. Government of India has established six regional reference standards laboratories which are functioning well at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Faridabad, Guwahati, and Varanasi. So at all these laboratories, the reference standards are being kept. These reference standards used to be verified after every 3 years from the international prototype. हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को भेजते हैं नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में, और नेशनल फिजिकल आफ्टर एवरी 3 इयर्स, और वो हम वहां पर कैलिब्रेट करते रहते हैं. तो क्या ऐसा होता है कि कभी वो कैलिब्रेशन खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी हैव एटलीस्ट 3 to 5 sets of reference standards. And it is not possible that at any point of time there will be at least 2 or 3 standards which are valid, which have the valid certificate and the validity which may be going to expire maybe next year or next year, like that. तो सारे के सारे जो standards हैं वो verified होने mandatory हैं. इसके बाद हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट की लैब्स आती हैं जहां पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसके बाद वर्किंग स्टैंडर्ड्स है, एंड देन द कॉमर्शियल वेट्स एंड मेजर्स व्हिच आर यूज्ड in the trade and commerce everywhere. These weights and measures used to be verified and stamped after every 2 years. I have already told you that these are the 6 regional reference standards laboratories which are working well, and for the development of the legal metrology system in our country, these laboratories are very important. They are playing a very important role for the development of legal metrology. The purpose of these regional reference standards laboratories is for the testing of weights and measures, because if anyone new weighing or measuring instrument is being manufactured or imported in our country, we used to check it, we used to test it through the rigorous testing. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी टेस्टिंग होती है, इट इज एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. कोई हमारा अपना एज सच नया स्टैंडर्ड नहीं है. हाँ, छोटा मोटा कोई चीज इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं which starts from -20 degrees Celsius or -80 degrees Celsius and goes up to 65 or 95 degrees Celsius temperature with the relative humidity of 95%. So this is the way how the testing is being done.
These laboratories also verify the legal standards of weights and measures. We also calibrate the weights and measures of the industries. Now the laboratories are working on a very important project, which is the dissemination of Indian Standard Time. I am shortly coming on this slide. We also have the training institute. It provides the training of its own type. It is a single institute which is providing this training to the legal metrology officers, not only of the India, but the neighboring countries. Regularly, we are getting the request. Even recently, one of our director of the institute was sent to Mauritius for developing their legal metrology system. We are also getting the request from other countries to support them for developing their legal metrology system in their country. India used to support regularly wherever required. And we have developed many of the Asian countries and other countries for help them for developing their own legal metrology system. Because the legal metrology system in India is a very organized and established structure, which is actually providing the accuracy and the security, and it ensures when you are getting a liquid or a liter of milk in the morning, the guarantee is given by the legal metrology that it is 1 liter. When you are getting a bottle of 1 liter, the guarantee is given by the legal metrology that it is 1 liter. And we used to check, our legal metrology officers of the state government and the central government used to ensure this accuracy on regular basis with the industries, with the traders, everywhere. So this is very important system in India, and this legal metrology basically, obviously, everywhere there are a lot of things, there's always a chance of improvement. So we have to develop ourselves. We are ready to adopt the new changes. We are ready to listen what are the new things can be done under the legal metrology. We are also providing this training for the international participants, this Legal Metrology Institute. Legal metrology, if I am talking about this legal metrology system, if we talk about this legal metrology, under this legal metrology, there are two terms, protection and transaction. Any type of protection, the legal metrology will come into the picture. And for any transaction, the legal metrology will come into the picture. So we are only responsible for the transaction and the protection through the instrument, through the weighing and measuring instrument or the CRMs, certified reference materials. Protection means I'm using a weighing or measuring instrument. जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये अपना कोई पर्सन weighing मशीन से वेट ले रहे हैं. जो वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिस वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं, यदि उस वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ऑब्जर्वेशन यूज की जाती है फॉर एनी safeguard of any human being, animal, or to protect any commodity, vegetation, or thing, whether individually or collectively, then this weight or measure will fall under the legal metrology category. कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आपकी दुकान पे लगा हुआ वेइंग मशीन, आपके शोरूम में लगी हुई आपकी कोई वेइंग मशीन, पेट्रोल पंप पे लगा हुआ पेट्रोल स्टेशन, रेलवे ब्रिजेस के अंदर लगे हुए रेलवे ब्रिजेस जो रेलवे ट्रैक पे लगते हैं, या धर्म कांटे, या आपका कोई भी ऐसा वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जहां पर प्रोटेक्शन होता है या ट्रांजेक्शन होता है. तो प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर मीटर, ईईजी, ईसीजी, ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट इंश्योर करते हैं ह्यूमन की वेलबींग को, एनिमल की वेलबींग को, या किसी कमोडिटी को, तो सारे के सारे वो लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर कवर होंगे. ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सेल परचेज के लिए, एक्सचेंज और एनी अदर पर्पस के लिए, or for assessment of royalty, all duty or other dues, or the assessment of any work done, wages due or services rendered. For any of this activity, if we are using any weighing or measuring instrument, then this weighing or measuring instrument is covered under the legal metrology. So these are the few things where the legal metrology system comes into the picture, whether it is protection or transaction. This instrument need to be tested and verified before putting into use. How to ensure? There are two things. One is calibration and the other is verification. हमारे यहाँ legal metrology के अंदर we used to talk about verification. हम calibration की बात नहीं करते, हम verification की बात करते हैं. और verification के बाद उसके अंदर तार बांध के सील लगा देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता. और तोड़ने के बाद उसके अंदर क्या होगा? यदि कोई सील टूटती है तो उसके ऊपर एक्शन होता है अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी, विच इज ए वेरी
स्ट्रिंजेंट एक्शन। तो सील और स्टैंप हम इसके ऊपर करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हम कोई एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से हम किसी जो अंडर यूज इंस्ट्रूमेंट है उसको कंपेयर करते हैं। लेबल का मतलब क्या है? लेबल का मतलब है कोई भी रिटेन, मार्क, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर affixed to or appearing upon any prepackaged commodity, it is known as a label। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर यदि कोई भी वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं जो कवर होने चाहिए, सेक्शंस हैं। सेक्शन 19 के अंदर यदि इंपोर्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन होगा इंपोर्टर का। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करते हैं तो अप्रूवल ऑफ मॉडल कराना होगा। उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग और सेल के लिए लाइसेंस लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट से। और उसको यूज करने से पहले या बेचने से पहले हमें सेक्शन 24 के अंदर इसका वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। These are the few things which we need to do। अभी हम लोगों ने कंज्यूमर और इंडस्ट्री को सेवगार्ड करने के लिए, दोनों को इंटरेस्ट को सेवगार्ड करने के लिए कुछ रिसेंट अमेंडमेंट किए। हमने एक इंट्रोडक्शन किया जो अभी दीक्षित सर बता रहे थे, यूनिट सेल प्राइस का। अब देखते होंगे आप पैकेट्स के ऊपर पर ग्राम या पर एमएल का रेट भी आने लगा है, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, कुछ पैकेज कमोडिटीज, वो केवल 19 पैकेज कमोडिटीज थी जो स्टैंडर्ड साइजेस में या प्रेस्क्राइब्ड साइजेस में बनती थी या पैक होती थी। हमने इंडस्ट्री के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें बाहर से आती हैं जहां पर शायद ये सब चीजें नहीं होती, उनके यूनिट भी आपके एमके सिस्टम में कई बार नहीं होते हैं, ऐसा सिस्टम में नहीं होते हैं, तो हमने वो हटाया। लेकिन उसके लिए साथ मैंडेटरी कर दिया है कि यूनिट सेल प्राइस डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। इसके अलावा पहले मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, पैक और इंपोर्ट सब अलाउ था। अभी हम लोगों ने केवल डिक्लेरेशन ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को ही मैंडेटरी किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हमने अलाउ किया है कि उनके अंदर कुछ डिक्लेरेशंस को थ्रू द क्यूआर कोड भी दिया जा सकता है। जो वेट्स एंड मेजर्स हमारे इंडस्ट्रीज यूज करती हैं इंटरनल यूज के लिए, उनके लिए वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए कंट्री के अंदर डबल स्टैंपिंग को स्टॉप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हमने पूरी कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जाता है तो किस तरह से यूज होगा उसका प्रोविजन बनाया है। इसके अलावा हमने कुछ सेक्शंस को डिक्रिमिनलाइज भी किया है। ये 7 सेक्शंस हैं जो पहले क्रिमिनल थे। हमारे इलीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर 23 पेनल प्रोविजंस हैं या 23 सेक्शंस हैं जहां पर पेनल प्रोविजंस दिए गए हैं। 23 में से हमने ये 7 सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये है कि कंपाउंडिंग बढ़ा दी गई है। Every time when somebody makes an offense, then the compounding will be very high. It will be in lakhs. But उसके साथ जो पहले एक प्रोविजन था कि इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, वो इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन हमने हटा दिया, बिकॉज इसमें ज्यादा जरूरत ऐसी नहीं थी, या केसेस भी इसमें इसके अंदर बुक नहीं होते थे जो ऑब्जर्व किया गया था। सेक्शन 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35 एंड 48, दीज आर द प्रोविजंस। ये टाइम डिसर्मिनेशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हम रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स की हेल्प से या रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स लैबोरेटरीज के थ्रू पूरी कंट्री में जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा उसको डिसमिनेट करेंगे। मे बी विद इन ए मंथ और 2 ये हमारा डिसमिनेट होना शुरू हो जाएगा। फाइनल स्टेज में है। मैं एक छोटा सा वीडियो इसमें आपको शेयर करता हूं। As millions in India go about their daily lives, a silent time revolution will unify and synchronize India. I think it is not visible. I'm just sharing it again. After stopping, I will again share it. Then you will be able to see. As millions in India go about their daily lives, a silent time revolution will unify and synchronize India into a single time reference, that is, the Indian Standard Time. New India will herald
As millions in India go about their daily lives, a silent time revolution will unify and synchronize India into a single time reference. That is the Indian Standard Time. New India will herald the time of its own. A synchronized system which will disseminate India's time to come uniformly across all corners. Telecom service providers and internet service providers are synchronized to NIST USA time, either through GPS or NTP. As a result, there is always uncertainty of time, like the time of your Aadhaar authentication or at the time of Indian Railways ticket booking and the airports. Communication devices across country. In order to cater to the ever-increasing needs of India Standard Time by several organizations in the country, the dissemination of time will be done by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution through its regional reference standards laboratories from 5 geographical regions of the country. So in terms of cyber security, where every second is crucial, where within a fraction of a second, thousands of emails and digital messages are sent and received across the continent. Thank you. So very soon we will be disseminating our own time through the regional reference standards laboratories, and it is very important for all type of activities, maybe cybersecurity, maybe disaster management, maybe defense, telecommunication, signatures, stamping, financial services, stock exchange. Everywhere it is very important, whether it is railway, metro, anywhere, it plays a very important role. We have recently drafted the legal metrology Indian Standard Time Rules 2025. The timing scale integration has been completed at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar and Faridabad, and it will be very shortly completed at RSL Guwahati. We have developed a disaster recovery center at RSL Bangalore. It will be just equivalent as we have at the national level at National Physical Laboratory. It will restore disrupted systems, data and applications after a disaster or significant disruption. The rules are for defining the Indian Standard Time, mandatory use of Indian Standard Time, penalties for non-compliances, exception to use of Indian Standard Time. These rules were uploaded on the website of the department seeking comments, and these comments are being finalized. We are expecting that within a month, these rules must be notified, and within 6 months, it will be mandatory to use our own Indian Standard Time everywhere. As we are all aware, I have already told you that India is the OML member country, and if we became the member of OML in 1956, we signed the Meter Convention also in 1956. Right now, we have 63 member states and 64 corresponding members. The purpose of this OML to harmonize the rules, regulations, laws on performance of weighing and measuring instruments all over the world. That's why I'm saying what the weighing and measuring instrument we are using in India, it is having the same performance anywhere in the world. So this type of accuracy or the surety is given by the legal metrology. It also harmonize and facilitate international commerce of measuring instruments and affected products, ensure quality measurements for public and worker health and safety and protection of environment, and harmonize national procedures. Recently, India has become, as we have seen in the video, the 13th country in the world which can issue the OML approval certificates. We have signed this Meter Convention, as we have already seen. This legal metrology division of the Department of Consumer Affairs has issued the OML approval certificates. These OML approval certificates are accepted worldwide, which reduces the redundancy and saving resources. India has issued few weighing and few certificates, OML certificates recently during the 1 year when we got this accreditation or this approval from OML. This is the news which we have seen on the website of the OML.
this is the name of the department that it has got, laboratory, etc. The purpose of getting this legal metrology system of India having been accepted worldwide, there are few advantages. Actually, it standardizes and cost reduces the cost. It generates the revenue. We can also now impact the OML policies, how it can support our own manufacturers. We can export the weighing and measuring instruments more. We are already exporting a large number of weighing and measuring instruments. We can enhance it more. It can also influence on other member countries, and we can enhance reliability and authenticity. So this is the way how the legal metrology system in India is working. All type of weighing and measuring instruments, maybe a radar, maybe a breath analyzer, thermometer, crane, ship tank, any type of weighing and measuring instrument you just think, it is covered under the legal metrology. These are the new weighing and measuring instruments which we are going to regulate shortly. Gas meters we have already regulated, speedometer we have already regulated, moisture meter, breath analyzer are already in picture line, and very soon we will be having all type of weighing and measuring instruments regulated in our country. Pre-packaged commodity. As we are all aware, nowadays most of the products are available in the form of a प्री-पैकेज कमोडिटी. ये प्री-पैकेज कमोडिटी कैसे कवर होती है? क्या है प्री-पैकेज कमोडिटी? कोई भी ऐसी कमोडिटी which was packed when the consumer was not present is known as a pre-packaged commodity. Behind the purchaser, the commodity was packed. It may be sealed or it may be open. There's not a problem. हमारे पास एक्ट के अंदर सेक्शन 18, जैसा दीक्षित सर ने शुरू में बताया, सेक्शन 18 और 36 है जो प्री पैकेज कमोडिटीज को डील करता है. सेक्शन 18 क्या बोलता है कि यदि आपने कोई भी प्री पैकेज कमोडिटी बनाया है सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए या इंपोर्ट किया है, तो इसके ऊपर डिक्लेरेशंस होने चाहिए. क्या डिक्लेरेशंस होने चाहिए अभी मैं डिस्कस करता हूं. और सेक्शन 18(2) बोलता है कि यदि कहीं पर आप रिटेल सेल प्राइस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट के साथ आपने वहां पर कितनी क्वांटिटी है वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा. ये मैंडेटरी है. हमारे पास प्री पैकेज कमोडिटीज के लिए तो पैनल प्रोविजन है वो क्या है? सेक्शन 36(1) बताता है, बोलता है कि यदि कोई कमोडिटी जो पैक की गई है वो उस कमोडिटी में डिक्लेरेशंस ठीक नहीं है जो रूल्स के हिसाब से होने चाहिए थे, पहली प्रोविजन के लिए या पहली बार ऑफेंस के लिए 25,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, दूसरे ऑफेंस के लिए 50,000 रुपए तक का हो सकता है, और उसके बाद 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फाइन किया जा सकता है. जो हमारा सेक्शन 36(2) है ये बताता है नेट क्वांटिटी के बारे में. इफ द एरर इज इन नेट क्वांटिटी, यानी कि शॉर्ट डिलीवरी है, क्वांटिटी कम है किसी वजह से पैकेट के अंदर, तो पहले ऑफेंस में 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और उसके बाद दूसरे या उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस में इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन 50,000 से 1 लाख रुपीज, और वो ये दोनों की दोनों पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल क्या है. प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल का मतलब यह है वो सारा का सारा सरफेस एरिया जहां पर डिक्लेरेशन दिया जा सकता है किसी भी पैकेज कमोडिटी का. मान लीजिए ये एक पैकेज कमोडिटी है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये भी मिला के यहाँ पर सब जगह जो टोटल सरफेस एरिया है ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल. प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल क्या बोलता है? सारे डिक्लेरेशंस एक ही जगह पर दिए जाने चाहिए. ऑल द इंफॉर्मेशन कुड बी ग्रुप टुगेदर एंड गिवन एट वन प्लेस. और दूसरा क्या बोलता है? द प्री प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कुड बी ग्रुप टुगेदर एंड गिवन इन वन प्लेस and online information grouped together in another place. So these are the two ways by which we can ensure that all the information is given on a pre-packaged commodity. कहने का मतलब क्या हुआ? या तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर दे दीजिए या प्री प्रिंटेड एक जगह पर दे दीजिए, ऑनलाइन दूसरी जगह पर दे दीजिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अलग अलग सब जगह सेग्रीगेट करके या फैला करके इंफॉर्मेशन देंगे. ज्यादा से ज्यादा 2 जगह पर ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. अब देनी क्या इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस स्लाइड को जरा हम देखेंगे, क्योंकि चाहे हम इंडस्ट्री हैं या कंज्यूमर हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कंज्यूमर्स. क्योंकि इंडस्ट्री में भी जो मेरी इंडस्ट्री है वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है. फॉर रेस्ट ऑफ 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स आई एम द कंज्यूमर. सो क्या क्या डिक्लेरेशंस होने चाहिए? नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पैकर और इंपोर्टर,
सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका नाम पता होना चाहिए. बाय चांस देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंज्यूमर, ही कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द इंडस्ट्री एंड कैन रिजॉल्व द इशू. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंप्लेन कर रहा है, फिर हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, परेशान हो रहा है. कंज्यूमर भी परेशान हो रहा है, इंडस्ट्री परेशान हो रहा है. यदि एड्रेस है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके खत्म किया जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्री ऑफ ओरिजिन. आई डोंट वांट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंट्री, तो मेरे को ये ऑप्शन होना चाहिए कि इस किस कंट्री से प्रोडक्ट आया है, इंपोर्ट कहां से किया गया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ताकि मैं उसको लेना चाहूं तो लूं. बिकॉज इट्स अ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर चॉइस, वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता. कॉमन और जेनरिक नेम ऑफ द कमोडिटी, क्या उसका कॉमन और जेनरिक नेम है. नेट क्वांटिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, मेजर और नंबर. मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, रिटेल सेल प्राइस क्या है, यूनिट सेल प्राइस क्या है, बैच बिफोर या यूज बाय डेट, मंथ एंड ईयर क्या है इफ अ कमोडिटी बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. साइज क्या है, डायमेंशन क्या है इफ रिक्वायर्ड, एंड कंज्यूमर केयर डिटेल्स. कंज्यूमर केयर डिटेल्स का मतलब फोन नंबर, ईमेल आईडी दोनों और एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए. यदि एड्रेस सेम है तो जरूरी नहीं है कि दोबारा उसको लिखा जाए. एक बार एड्रेस लिख दिया तो वहां लिख सकते हैं, वो ऑलरेडी गिवन है. तो एक बार एड्रेस दिया गया यदि सेम है कंज्यूमर कंप्लेंट का भी, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इज मैंडेटरी, ताकि कंज्यूमर डायरेक्ट कांटेक्ट करके इमीडिएटली रिजॉल्व कर सके अपने इश्यूज को. यदि आपको लगता है कि कोई फोन नंबर या ईमेल आईडी नहीं है और कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो काइंडली आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. और यदि नहीं हो रहा है तो वी कैन टेक एक्शन. ई कॉमर्स, आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर, और मुझे लगता है ये पहला रूल है लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर इस कंट्री में जो कि ई कॉमर्स को रेगुलेट करता है कि मुझे ये डिक्लेरेशंस ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर चाहिए. जब प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो जो मैंने अभी ये बताए ये सारे डिक्लेरेशंस होंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर. जब भी कोई ई कॉमर्स से हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है, प्री पैकेज कमोडिटी आता है, तो ऑल दीज डिक्लेरेशंस आर रिक्वायर्ड. बट व्हेन आई एम गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, देन at least these much declarations must be available on the website, on the e-commerce site. क्या है? Name and address of the manufacturer, importer, packer, country of origin, common or generic name of the commodity, net quantity in a standard unit of weight, measure or number, MRP, which is very important, and it should be inclusive of all taxes, batch before or used by date, month and year. It is also very important when we are talking about the batch before, because many times what happens in case of a product which is becoming unfit for human consumption after a period of time, and the consumer is getting the product, it is at the last date or it is just going to expire within a day or two. So consumer is actually in trouble कि उस प्रोडक्ट का क्या करे जो एकदम एक्सपायर होने वाला है 2-3 दिन के अंदर. तो उसके लिए उसे पता होना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी अभी है 1 महीना 15 दिन जो भी कुछ होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीगल मेट्रोलॉजी में कि जो भी डिक्लेरेशंस है उनके जो साइज है लेटर और न्यूमेरिकल नंबर के, वो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं लॉ के अंदर. ऐसा नहीं है कि कुछ कम करना है, ज्यादा करना है, कोई किसी की लिबर्टी नहीं है. ना ही हमारे पास लिबर्टी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, और ना ही इंडस्ट्री के पास है. ये साइज देना ही देना है, सिंपल. जैसे यदि प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल 50 mm से कम है, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है, तो जो साइज ऑफ लेटर होगा दैट इज 1 mm. 50 से 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 1.5 mm एंड सो ऑन, यदि आप उसे प्रिंट कर रहे हैं. लेकिन यदि हम उसको ग्लो करते हैं या मोल्ड करते हैं सरफेस के ऊपर कंटेनर की, तो उस केस में ये डबल हो जाता है. फॉर 1 mm इट विल बी 2 mm लाइक दैट, सो दैट इट कैन बी रीड इजिली. ये साइजेस हैं जो किसी भी डिक्लेरेशन के लिए होने चाहिए प्री पैकेज कमोडिटी के ऊपर. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रोविजंस हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी इंपोर्टर, डीलर और अदर पर्सन या कोई भी बंदा किसी भी प्री पैकेज कमोडिटी को एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकता. एमआरपी के ऊपर बेचना एक ऑफेंस है, वायलेशन है, एंड ही यूज्ड टू गेट द these complaints on regular basis. I don't know why the people are again and again doing the same thing. When it is a violation, please stop it. सेकेंड इज डुअल एमआरपी इज आल्सो नॉट अलाउड. ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ एमआरपी होगी, वहां पर दूसरी जगह पर कोई दूसरी एमआरपी होगी. एवरीवेयर फॉर द सेम प्रोडक्ट देयर विल बी द सेम एमआरपी फॉर एन आइडेंटिकल प्री पैकेज कमोडिटी. नो पर्सन कैन ऑल्टर द रिटेल सेल प्राइस वंस डिक्लेयर्ड. डिक्लेयर मींस डिक्लेयर. जितने भी प्री पैकेज कमोडिटी बनाने वाले हैं, पैक करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए either with the director of the legal metrology or with the controllers of the legal metrology of the state government. कहीं से भी करा सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टर लेवल पर ये बहुत ही सिंपल ऑनलाइन पोर्टल पे है. आपका nsws.gov.in पोर्टल है. सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल में जाकर के रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेज कमोडिटीज में आप यदि अपनी एप्लीकेशन लगा देते हैं, वी जस्ट आस्क द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर या पैकर और इंपोर्टर एंड द कमोडिटीज. बहुत ही वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन
₹500 का फीस दे करके, एंड दिस सर्टिफिकेट इज यूज्ड टू बी इशूड विद इन 15 डेज ऑफ द सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। 15 दिन के अंदर जनरली ये इश्यू हो जाता है, उसके आगे नहीं जाता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन जिन के पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, काइंडली गेट इट डन, इट इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम किसी प्रीपैकेज कमोडिटी को करते हैं तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी अलाउड है। ये इंडिविजुअल पैकेज की बात हो रही है। यदि 50 ग्राम या 50 ml तक है तो 9% और 40 ग्राम इट बिकम्स 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम तक इसके अंदर जो इसकी एक्यूरेसी है या इसकी जो नेट क्वांटिटी है उसका टॉलरेंस दिया गया है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम तक 4.5 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम से 100 ग्राम तक है तो 4.5 ग्राम या 4.5 ml आपकी एरर हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकता है। यदि हम बात करें 1 किलो की, तो 1 किलो के लिए आप देखेंगे इट इज 15 ग्राम। फॉर 15 kg इट इज 150 ग्राम, एंड आफ्टर दैट इट इज 1%। सो लेट्स से एक पैकेज कमोडिटी जिसके अंदर 20 किलो भरा है, तो 20 किलो का 1% कितना हो गया? 200 ग्राम। 100 ग्राम तक उसमें कम या ज्यादा हो सकता है। ये बात हो रही है एक इंडिविजुअल पैकेज की, लेकिन ऐसा नहीं है सारे पैकेज में इतना होगा। एवरेज विल ऑलवेज बी सेम, जितना डिक्लेयर्ड है। ऐसा नहीं होगा कि किसी पूरे एवरेज में, बिकॉज इट इज गिवन कंसीडरिंग द टियर एंड वियर ऑफ द मशीन। जो मशीन है उसकी एक्यूरेसी को, उसके अंदर गलती ना हो जाए, उसके लिए ये टॉलरेंस दिया जाता है। बट इट डज नॉट मीन कि आप उसमें कम पैक करेंगे, क्योंकि जब हम चेक करते हैं तो हम लॉट चेक करते हैं, सैंपल टेस्टिंग करते हैं, और उसके अंदर ये वो एवरेज कम आता है तो हम उसको सीज कर लेते हैं पैकेजेस को और केसेस बुक करते हैं। इसी तरीके से यदि कोई नंबर है लेंथ में तो 2% होता है, एरिया है वहां पर 4% है। यदि आपका 10 स्क्वायर मीटर है और उसके बाद 1% हो जाता है। नंबर में भी यदि कोई कमोडिटी 100 पेंसिल्स आपने पैक की है किसी पैकेट के अंदर, तो वहां पर भी 2% ऑफ द डिक्लेयर क्वांटिटी में एरर अलाउड है। इंस्पेक्शन के लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी में पैकेज कमोडिटीज के, जो यहां पर नेट क्वांटिटी की चेकिंग के लिए फैक्ट्रीज में। और इसके एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, एक सिंपल फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम चेक करते हैं कि जो करेक्टेड वैल्यू है एक्स सी, वो आपका एक्स बार, दैट मींस द एवरेज और मीन वैल्यू, सिग्मा दैट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, मल्टीप्लाइड बाय 6c विच इज द करेक्शन फैक्टर। इससे हम इसको निकालते हैं, एंड दिस करेक्शन फैक्टर इज कांस्टेंट फॉर द inspection lot size. For let's say lot size is up from 100 to 500, the sample size will be 50 and the correction factor will be 0.379, and the number of packages which may have the error more than the maximum permissible error but less than the twice of the maximum permissible error are only 3. For the number of packages in the lot of 501 to 3200, 5. So as so on, it is completely as per the international practice. हमारे देश में जो भी सारी दुनिया में चेक होता है वो यही फॉर्मूला है, यही तरीका है जिसके बेस पर पूरी दुनिया में हम लोग नेट क्वांटिटी को चेक करते हैं, नेट क्वांटिटी को पैक करते हैं। ये कुछ अमेंडमेंट्स हम लोगों ने किए हैं जो कि हमें पता है ऑलरेडी। एक जो यूनिट सेल प्राइस को हमने डिक्लेयर किया वो भी बता देता हूं। जो यूनिट सेल प्राइस हम डिक्लेयर करेंगे उसको हम राउंड ऑफ करेंगे इन द नियरेस्ट 2 digits. Unit sale price will be in terms of per gram when it is less than 1 kilogram, and it will be in kilogram when it is more than 1 kilogram. Similarly for length, similarly for meter or liter, etc. But for alcoholic beverages or spirituous liquor, the state excise laws and the rules are applicable, and therefore there is no need to declare the unit sale price. Further, the unit sale price is also not required to be declared if the retail sale price and the unit sale price are the same. These are the few definitions. For example, if the package is a group package, multi-piece package, or a combination package, again, it is not required to be declared on the pre-packaged commodity the unit sale price. For these 3 type of packages also, the declaration of unit sale price is exempted. For selling loose commodities through e-commerce websites, few of the declarations are required to be made on the e-commerce website itself. Name and address of manufacturer, marketer or brand owner, consumer care detail, email ID and phone number, retail sale price, and the net quantity. These are the 4 information which need to be given for any of the commodity which we are selling in loose
through the e-commerce websites. Because when we are going in the market and we are getting it, then we are aware that who is selling, number one, how I can contact the person who is selling. Next one is the retail sale price. Obviously, in case of the loose products also, the consumer is aware what is the retail sale price and the net quantity, how much he is buying. So at least these four informations are necessary to be given on e-commerce website for any prepackaged commodity which is available in loose. These are few definitions we have already discussed, that we have given the exemption for declaring few of the declarations through QR code for electronic devices. Again, we have given that for the garments and the hosiery which we are selling in loose, again, the same declarations are required to be given. In this case, in place of the net quantity, the size in metric notation in terms of centimeter or meter, as the case may be, or with internationally recognizable size indicators such as S, M, L, XL, etc. And along with details in metric notation is mandatory. And MRP. Section 109 we have already discussed. All the e-commerce websites, these are the number of certificates which we are issuing on every year by year. If we see the number of nominations, every year we are issuing in thousands, 7,000 and like that. Registrations, approvals, we are regularly issuing. All the services are available on our national single window system. We have issued large number of notices for the violation of Legal Metrology Act and rules. And this is only by the central government, because at central government level, we issue very few very few notices. All these notices are issued by our state government's legal metrology officers. Recently, we have made a provision for the revised timeline for implementing amendments in the legal metrology packaged commodities rules. Now, the amendment will come into force from either 1st of January or 1st of July. This will be after giving a time of at least 180 days so that the industry or the businesses can get sufficient time to adopt the changes. This amendment is made recently, or this provision has been made recently, that any of the amendment will be applicable either from 1st July or 1st January, giving the time of at least 180 days. Government of India is also working on developing an EMAP portal. This is basically for the digital transformation of legal metrology. All the services of all states will be available on this portal. Very soon, within this year, we will be having all the services. Activities are happening through this portal of all states. Even the enforcement, even the issue of notices, compounding, hearing, everything will be through the portal. It should be very transparent. All the licenses, everything will be available on the portal. This system will simplify certificate verification and compliance across sectors, ensuring consistent, accurate, and transparent weights and measures for commercial transactions. Platform will enhance efficiency in monitoring and enforcement, bolstering consumer protection and fairness in the marketplace. It is a transparent and efficient legal metrology system will inspire confidence in trade, commerce, industry, and consumer, and it will bring harmonious environment for conducting business. This EMAP portal, it will be applicable for all legal metrology approvals, licenses, registrations, and all services. It will eliminate multiple state portal registration. You will do one registration and get all the services of all the states. It will reduce the paperwork. There's no need of paper. Even when I'm issuing, all my applications are online. Even I'm not issuing the certificates which are digitally signed. I'm signing and getting it uploaded on the website. All these certificates which are uploaded on the portal are also available on our website. Anybody can check our website of the Consumer Affairs Department under the legal metrology. All certificates are available. Anybody can check any of the certificate. Even the trainings which we are organizing, all certificates are available on our portal, which we have shown you, which we used to issue or which we used to declare on the pamphlet, even in the presentation also. It will minimize compliance burden, ensure timely adherence and ease of consumers for verifying authenticity of the certificate. Anybody can check whether this certificate is issued by us or not, by a state government or not. Anybody can check. Any consumer can check whether this machine is verified or not. So we have already onboarded about 19 states, and rest of the states will be onboarded shortly. India has also made a very interesting achievement recently. Now we have also developing, but we actually have already installed at few places the software testing facility. This is one of the best facility which very few countries in the world have.
Now because every weighing and measuring instrument has the software and the electronics. How to test the software and the electronics? Maybe the software is we are doing the validation only, not the testing actually. I should call the validation of the software, but the testing of the electronics. We have developed this facility in our laboratories, RRSs. It is for the installation. We have already cutting edge software testing facility. This software testing in weighing and measuring instrument is essential as software directly influences the accuracy and reliability of measuring or measurement results. The testing focuses on several key aspects of electronic instrument assessment, like verifying measurement accuracy through detailed testing of calculation algorithms. The testing infrastructure will support the Make in India initiative by enabling domestic manufacturers to meet rigorous international standards for weighing and measuring instruments. We are also going to frame these new rules under the Legal Metrology Act and the package under the general rules. These instruments will also be regulated very shortly. All these equipments are under process of either revision or inclusion of the new weighing and measuring instrument. I hope by the end of this year, financial year, all these equipments which are available at the international level will be added in legal metrology, Government of India. We will start verification. For example, radar equipment for measuring speed, we have already notified from 1st of July. They will come into force, and all these radars which are available, which are actually used for the for basically making the penal provisions or penalties, will be verified, stamped, and tested. But this is a very good instrument, and in the world, I'm very happy to say, very few countries in the world are actually doing this testing. I hope that very few technical persons are available in this field. I know one of the only person, Mr. Fraser, he's all over the world. He's the only person who is doing it. Even the PTB Germany, Meta Switzerland, they are taking the help of few of the persons who are available in the world. I hope that my legal metrology officers will be very shortly competent to as other legal metrology officers or very few legal metrology officers of the world, because this is a new technology. How to test, testing is very important, very rigorous, and actually it is having very important things which we are going to introduce in our country. Gas meters, large number of gas meters are already installed. We are getting that my gas meter is not correct, not giving the correct readings. Nowadays, a lot of new electronics have been introduced. So these gas meters have also been notified. They will come into force from 1st of September 2025. All the gas meters, either using domestic sector, industrial, or the commercial, will be verified and stamped to ensure they are correct. So these are the new developments which we are doing, and rest of the equipments will certainly change the way of working as we are working in the legal metrology in our country. A lot of developments are regularly happening. We are actually thankful to our ancient forefathers who have made this system so simple and so developing, so that we are able to add new and new equipment with our same facilities which we are having at our laboratories, maybe in the government sector or maybe in the private sector. So this is the way how we are working in our country. With this, I would like to thank all the participants. Now I would like to take questions, if any, so that we can discuss. I'm unsharing my presentation. Atulji, you are here? I'm sorry, we could not make all the participants because there were large number of participants. We could not get them converted into the panelist list. How to get it done now? Okay, anyway, I would like to see few of the questions if possible. Okay, so now I think my NIC team is making the participants the panelists, so that you can also raise your voice and you can also ask the questions if you have. For YouTube channels, I think it will be difficult. We cannot reply on this YouTube channel. We will not be in a position to take the questions on this YouTube channel. But anyway, my request to all the participants to kindly switch on your video so that we can take few photographs which will be available on our all social media platforms. Only you can share your photograph, because the participants who are on the YouTube channel, they cannot share their video due to that technical capability of the system.
we could not take all the participants on the directly on the link. That's why this YouTube channel was used. Yes. Anyone would like to ask any question? हेलो सर, Yes, sir. Please. हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? Yes, yes. Why not? Please. कर सकते Yes, हैं. sir. बोलिए. हिंदी और इंग्लिश. यस सर। जी. तो जो पैकेज के साइज में जो होता है, वो जो आपने बताया, जो अभी पैकेज में जो होता है और पैकेज में जो ज़्यादा या कम होता है, या वो डेट जो दिया जाता है हमको, एक्चुअल डेट जो एक्सपायरी का, उससे कितने दिन पहले हम उसको यूज कर सकते हैं? सी जो एक्चुअली में क्या होता है ना, जनरली हमारे यहाँ क्या लिखते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स की, शायद आप फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, फाइनली स्विच ऑफ योर माइक. थैंक यू. देखिए हमारे यहाँ हम लोग जो लिखते हैं, जो कोडेक्स स्टैंडर्ड्स हैं या फूड स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली, वी यूज टू राइट बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट. सो बेस्ट बिफोर उससे पहले अच्छा है. यूज बाय डेट का मतलब ये है कि आप उसके बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए, जो डेट उसके अंदर दी गई है. बेस्ट बिफोर में उसके बाद यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उसके बाद उतना अच्छा होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं होती. लेकिन यूज बाय डेट में कहते हैं इस डेट के बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए. सो बीवी हम लोग क्या लिखते हैं, बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट. बेस्ट बिफोर का मतलब है बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज बाय डेट में उसके बाद यूज नहीं करना चाहिए. Anybody else? Please kindly switch off your mic. सर नमस्ते सर. नमस्ते साहब. प्लीज. सर मैं कन्नड़ में बोल सकता? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं. सॉरी, आई एम सॉरी, आइदर हिंदी और इंग्लिश. आई एम सॉरी, हिंदी और इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश सर. ये फुल इंडियन नेशनल लैंग्वेज ना, नेशनल लैंग्वेज हिंदी में बोल रहा है. मतलब ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है सर? ये सब मेरी समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? अभी ये लाइसेंस के लिए मैं अभी सुन लिया ना. हाँ? और किस लिए इम्पोर्टेंट सर ये? क्या किस लिए, क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा अभी वो ले रहे हैं ना, जागो, ग्राहक जागो बोल के सर्टिफिकेट ले रहे हैं ना, ट्रिपल सर्टिफिकेट के लिए. नहीं, सी आप देखिए, ये तो एक कॉमन नॉलेज शेयरिंग है. जो लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, केवल कॉमन शेयरिंग देते हैं. ये तो हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से सबको हर एवरी सैटरडे, अच्छा बहुत सारे लोग नए भी होंगे, मैं बता दूं, हम लोग हर शनिवार को ये प्रोग्राम करते हैं 11 to 12:30, और हर टाइम पर अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, अलग अलग स्पीकर्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे बताते हैं. आप सारे लोगों को ये बेसिक इंफॉर्मेशन कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसकी वेइंग सही है कि नहीं है, या उसके ऊपर जो डिक्लेरेशंस हैं वो सही है कि नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जनरल इंफॉर्मेशन है. ठीक है. यदि कोई क्वेश्चन है पैकेज कमोडिटी या लीगल मेट्रोलॉजी से रिलेटेड तो काइंडली बताइए. इफ एनीबडी विश टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द पैकेज कमोडिटी लीगल मेट्रोलॉजी. Otherwise, I will not waste गुड your आफ्टरनून time. सर. Good afternoon, साहब. ये सर अभी अपने जैसे ये आपने जो नॉलेज दी है, हमें सिखाया है, ये कोई हिंदी में कन्वर्ट नहीं था क्या, कि ओनली इंग्लिश में बोलना था? इंग्लिश और हिंदी मैंने मिक्स करके बोला था, और इसमें बहुत सारे लोग एक्चुअली में क्या होता है ना, इंग्लिश और हिंदी मिक्स होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि सबकी समझ में आ जाए. हाँ, यदि कुछ हिंदी का होगा अगली बार कोशिश करेंगे और ज्यादा हिंदी हो जाए, या जो स्लाइड है उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आ जाए. जी जी, क्योंकि जितना होता है उतना इंग्लिश में थोड़ा सा कम बैठा था, और ये इंग्लिश में थोड़ा ठीक है, सा. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. अगली बार और ज्यादा कोशिश करते हैं. ठीक है, गुड, वेरी गुड. लेकिन आप करेंगे ना एक दो बार तो समझ में आएगा, डोंट वरी. Yes, और ये तो हम हर हफ्ते हर महीने कम से कम एक लेक्चर तो इसके ऊपर होता ही है. पैकेज कमोडिटी, लीगल मेट्रोलॉजी, नए नए इक्विपमेंट क्या आ रहे हैं. एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि कंट्री में कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं. हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम, और अच्छा होगा. आप मुझे ये बताइए और क्या कर सकते हैं, कहीं कोई कमी है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, कैसे और अच्छा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है. उसके लिए सब लोगों से एडवाइस लेने का पर्पज यही होता है. इतने लोग जो बैठे हुए हैं, सब लोगों का यही पर्पज है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, यदि कुछ और अच्छी चीज है तो हम तक आ सके, या आपको जो हम कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स लॉ की, वो आप तक पहुंचा सके.
Sir, how Yes. can I register every week to attend this session? Because I'm not getting every week. Only today I got the link. Okay, no problem, ma'am. What you do now, when you have registered yourself. Yeah, yeah. Okay, so we will try that every week you will get the information. Don't worry. But this information is also available on our legal methodology portals, or not only portals, actually the legal methodology social media platforms, Facebook, Instagram, and rest of the others. LinkedIn. We used to issue this information on every social media platform every week. Again, And these photos which we are taking now, they will also ha. be available on all these social media platforms. Okay, sir. Thank you, sir. And one more thing, sir. Where can I get that I attended this session? So how can I All the certificates, email? very good, very good, very good. All these certificates are available on our website, which is given in this, even on the on my first slide. I have mentioned you. I am giving you in. I am just speaking. grahakjago.gov.in /seminars. You will find even my pamphlet which was issued everywhere. It is mentioned grahakjago.gov.in /seminars. You can check all your certificates are available on the website. Whenever you have attended or you have participated in any one of the program, you will find your certificates are available. You can get it downloaded from there. And it is free, of course. Not charging anything. All these trainings are free. जी गुड आफ्टरनून सर हेलो Sir, good afternoon. One by one, please. हेलो गुड आफ्टरनून सर बोलिए. मेरी आवाज आती है क्लियर आ रही है? जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि क्या मैं इसमें फास्टैग ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ पूछ सकती हूँ सॉरी, मेरा फास्टैग का ट्रेनिंग नहीं है. मैं लीगल मेट्रोलॉजी का दे रहा हूँ ट्रेनिंग. आप फास्टैग वालों से बात कर ले प्लीज. ओके सर लीगल मेट्रोलॉजी में कुछ पूछ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. This is for the legal metrology. And every week these trainings are free of cost. But not only on this legal metrology, they will be on different topics. सर नमस्ते सर, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ. ये जो बता रहे हैं सर ना आप अगर अगली बार से ज्यादा हिंदी में हो तो ज्यादा बेटर रहेगा सर क्योंकि ज्यादा बहुत अच्छी लोग बात है. हिंदी में ही सुनना चाहते हैं ओके बहुत अच्छी बात है. श्योर, बिल्कुल अगली बार से करता हूँ. मैं ज्यादा कोशिश करूंगा. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर सजेशन. लोगों को हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई थिंक जो मेनी ऑफ द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द हिंदी बैच, दे मे बी इट मे बी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स. उसके लिए थोड़ा इंग्लिश में बोलने की जरूरत होती है. Yeah, for us English is better, sir, because we are from South India. We don't know Hindi, so English is better for us. That's why we are having a mix, Hindi and English both. सर नमस्ते सर. हम हिंदुस्तान में है तो हिंदी बोलो तो बढ़िया है. जी जी. Anyone else? जी. सर नमस्ते सर. बताइए साहब. सर इसका बाद इसका बारे में एग्जाम रहता है सर. एग्जाम नहीं, एग्जाम नहीं होगा. ये जस्ट इंफॉर्मेशन है. आपको पूरा वीडियो और ये प्रेजेंटेशन वेबसाइट में मिल जाएगा हमारी. आप इस वीडियो को और प्रेजेंटेशन को वीडियो उसमें देख सकते हैं. आशुतोष जी सॉरी, लेकिन मुझे ऑडियो नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा से अभी इसके बाद क्या करेंगे. नो वन, एवरीबडी वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग. आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए. सर तो नमस्ते सर. सर्टिफिकेट हो सकता था कि आपने बोला कि एमआरपी से ज्यादा में कोई भी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता. बट जैसे हम रेलवे स्टेशन पर अगर जाते हैं तो वहाँ पानी बोतल वो लोग एमआरपी से ज्यादा सेल आउट करते हैं. वो लोग सर्विस चार्ज अपना ऐड करते हैं कि पानी बोतल ठंडा है. सर उस केस पे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. आप एक बिल ले सकते हैं, नंबर 1. और नंबर 2, बिल लेने के बाद आप उसको 1915 हमारा कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर है, आप काइंडली नोट कर लीजिए. 1915 इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं एंड देन एक्शन विल बी टेकन. मैं ये नहीं कहता इमीडिएट हो जाएगा. इट मे टेक सम टाइम, few days it may take, because it will go through the channel to the, because हमारे सारे states में at every place we have the legal metrology officers or the inspectors of legal metrology who used to take action. हम उन तक भेजते हैं और उसके वहां पर वो लोग एक्शन लेते हैं. सर गुड आफ्टरनून सर. How and when we get certificate, sir?
दिस ट्रेनिंग यू विल गेट विद इन 10-15 days, आपको अपने आप आ जाएगा ऑनलाइन। आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और मेल में भी देख सकते हैं, आपकी मेल में भी आ जाएगा और वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। वेबसाइट बोल सकते हैं सर आप? वेबसाइट जागो ग्राहक जागो, सर जागो ग्राहक जागो और gov.in /seminars। ब्रेक हो रही है सर। क्या आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बताइए। जागो जागो ग्राहक ग्राहक बताइए सर। जागो, प्लीज तो एक साथ मत बोलिए, सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक ही बोलेगा, मैं इसलिए ब्रेक करूंगा। जागो प्लीज सेंड जागो ग्राहक जागो gov.in/seminars। Can we close? Sir, can you send the message, sir? Because so many disturbance, sir. I'm just doing it. Okay, sir. I will write down here. मैसेज में आ चुका है। हेलो सर। कहिए होगा। नमस्ते सर। Stay. सर गुड आफ्टरनून। मेरा नाम बाबू है। पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। मुझे लग रहा है आवाज इसमें दिक्कत आ रही है। हिंदी में बोलिए ना सर। साउंड दिक्कत है सर। हमसे सर। To thank all the participants. We will meet next week with the next new topic on next Saturday at 11 o'clock. Thank you. Thank you very much. Thank you all.